Hello everyone. So we will continue with our revision series of Geography NCERT class ninth text. This is the second chapter. We have already done the first chapter. If you have not referred to it, you can refer to it. First chapter was about India location, and now the second chapter is about physical features of India. So starting with the chapter, we will be reading it. This is a long chapter, so we will try to maintain the pace. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is, mountains, plains, deserts, plateaus, and islands. The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms from the viewpoint of geology. Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. So this is the introductory passage of the chapter. In a way, it has summarized the things that we are going to learn in this chapter, which is the physiographic divisions of India, and India being a diverse country, which is having glaciers in the north, ocean in the south. So different kinds of climatic zones, physiographic features, relief features are there in India, and that is what is being uh, the diversity of that is being summarized here in this introductory paragraph. Okay, so for example, varied landforms. For example, there are plains, then there are hilly regions, then there are valleys. Okay, coastal regions are there, deserts are there in the Rajasthan, plateaus are there in the southern India. There are islands in the Indian Ocean. Okay. Similarly, great physical variations geologically. Geologically means Earth's crust, Earth's surface, history of that. That is almost the study of the geology is the surface of the Earth and its history. So, peninsular plateau, if you see, very ancient landmass. We will study deeply about these in this chapter only. Very stable, okay, oldest. That also shows that it has survived till now without breaking up, without going too much modification. That shows that it is a stable landmass. Then Himalayas are very young mountains. They are still rising. They are still shaping up. Similarly, northern plains, they have formed even after the formation of Himalayas. They are even younger. Then you have topography of Himalayas. So briefly, we will go through all of these alluvial deposits of plains, igneous and metamorphic rocks. Different kinds of rock systems are also there. So starting with major physiographic divisions. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. So these are the Himalayan mountains, prominent, the northern plains, okay, and they are also, if you see, from north to south in a way. Peninsular plateau, okay, peninsular plateau, then Indian deserts, they are in the northwest of India. If this is India, so you have
Indian desert will be here, Himalayas here, plains here, okay, and then you have peninsular plateau here and islands here, okay. Himalayan mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains. Geologically young, as we discussed now. Himalayas are a fold mountain because you see Indian plate is moving towards Eurasian plate, and this is leading to the folding. Okay, the Earth's crust is folding here, leading to the formation of Himalayas, and they are still in the process of formation. So these mountain ranges run in a west to east direction. Okay, Himalayas are running from west to east. We know that from the west, from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas, for example, if you see in the map, this is the west. Okay, from here you can see that Himalayas are in the east. If you see the Indus, this is the Indus plain, right? Indus river originates here, and different tributaries also originate in the Himalayas. Similarly, Brahmaputra here, and so between the Indus and Brahmaputra river, the Himalayan range is broadly there. The Himalayas represent the loftiest, everyone knows, one of the most rugged mountain barriers of the world. Barriers in the sense they protect India, that is also known to every Indian. They protect India from the weathers, from the winds from Siberia, cold winds from Siberia. Also, they protect from movement of people. So that has been one of the reasons India was a very prosperous country in the ancient times, because invaders could not. They form an arc. hmm, When they form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. Okay, their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in the Arunachal. So again, refer to map. They form an arc. So if you see, so this is the arc. They are not in the linear shape. They are in the arc shape. Width, if you see the width, they are wider. So if you see width wise, the Himalayas are wider in the west and they are narrower in the east. Okay, this is the width. This extends to the width. तो वेस्ट में चौड़ाई ज्यादा है और ईस्ट में पतला होता जाता है हिमालयस. So that is a property of Himalayas. And the length 2,400 kilometers. So this length approximately is 2,400 kilometers, whereas width you see here around 400 kilometers, and here you have around 150 kilometers. Okay. The altitudinal variation, altitude refers to height of mountains, are greater in the eastern half than those in the western half. Altitudinal variations. So altitudinal variations means जो पहाड़ों की ऊंचाई है, the height of the mountains, variation in that. So changes in the height of the mountains is higher in the eastern side and it is lower. So there is less variation means their heights will be near about same. वेस्टर्न साइड में जो ऊंचाई होगी वो एवरेज के आसपास होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. ईस्ट में यू हैव मच मोर वेरिएशंस, ठीक है, एल्टीट्यूड में. सो देयर विल बी सम वेरी हाई लाइक कंचनजंगा and there will be some very low peaks as well. The Himalayas consist of three parallel ranges. Its longitudinal extent. So what is longitudinal extent? Again, this is the longitudinal extent. Okay, this is the longitudinal extent,
And Himalayas has three ranges. If you see the first one here, this one, you can say that is the first one, that is Great Himalayas. Then you have, this is also referred to as Himadri. Its name is Himadri. Then you have the second one, the middle one. Middle one is Himachal Himalayas. Its name is Himachal. Okay, or Lower Himalayas. And the third one, that is the last one, that is Shiwalik, or it is also called as Outer Himalayas. Hmm. So the northernmost range is known as Great or Inner Himalayas, or the Himadri, as we discussed. It is the most continuous range. It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. Okay, so average height you can take as 6,000 meters. Now let us refer to this. What are the properties that are being highlighted? Most continuous range. Most continuous range means ब्रेक्स कम है इन दोनों, जैसे जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में ब्रेक्स कम है. किसके कंपैरिजन में? द हिमाचल एंड द शिवालिक, जो नीचे के रेंजेस हैं. नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे उत्तर में कौन हो गया? हिमाद्री. द सेकंड मिडिल रेंज इज हिमाचल एंड द लास्ट वन दैट इज शिवालिक. तो सबसे ज्यादा ब्रेक्स किस में होंगे? इस लॉजिक के अनुसार शिवालिक में हो जाएंगे. उससे कम, उससे ज्यादा, उससे कम हो जाएंगे किसमें? हिमाचल में. और सबसे कम किसमें हो जाएंगे? हिमाद्री में ब्रेक्स. मोस्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है. नेक्स्ट, लॉफ्टीएस्ट, सबसे ज्यादा लंबे पीक्स किसमें मिलेंगे? अगेन हिमाद्री. इसकी एवरेज हाइट आप देख लो 6,000 मीटर्स. तो आप जितने बड़े बड़े पहाड़ों के नाम जानते हो, चाहे एवरेस्ट हो चाहे कंचनजंगा हो, वो सारी किसमें मिलेंगे? हिमाद्री में मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पीक्स दे रखे हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, तो इसको आप देख सकते हैं. द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical. Again a geographical term is there. The fold of the great Himalayas is Himadri, are asymmetrical in nature. तो फोल्ड मीन्स क्या है? अभी हमने देखा जब पहाड़, जब अर्थ सरफेस, दो अर्थ सरफेस पास आ रहे हैं, दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है अर्थ क्रस्ट का, अर्थ सरफेस का. ठीक है, उससे ये पहाड़ बन रहा है, तो ये फोल्ड हो गया. अब सिमेट्रिकल क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा व्हेन बोथ साइड आर सिमेट्रिकल. अगर इस पे हम एक परपेंडिकुलर ऐसे बीच में करें, तो अगर दोनों साइड सेम है, मतलब ये स्लोप जो है और ये स्लोप है, इफ बोथ स्लोप्स आर सेम, सिमिलर, देन इट विल बी अ सिमेट्रिकल माउंटेन. इफ सपोज while pushing it, it becomes like this mountain, because the constant push by Indian plate. If this becomes like this, then your axis will tilt like this. This will be higher peak, steeper peak, and this slope will be gentler. ठीक है. Starting with the next thing. और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? The core of this part of Himalayas is composed of granite. ग्रेनाइट कौन सा है? किस टाइप का रॉक है? इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, ग्रेनाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. सो जो कोर है इसका, सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो अंदर का जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है. तो मेटामॉर्फिज्म हुआ है, वेरी ह्यूज प्रेशर, टेम्परेचर. ठीक है, उससे बना हुआ है. इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड. पेरेनियली स्नो बाउंड मीन्स हमेशा यहाँ पे स्नो रहता है. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस. और क्या है? हमेशा यहाँ स्नो है. पेरेनियल मतलब हमेशा. स्नो बाउंड, हमेशा यहाँ पे स्नो कवर रहेगा. एंड यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर देयर. और नंबर ऑफ ग्लेशियर होने से क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिवर. So most of the prominent rivers that you see which create the plains in the India, they are they their origin lies in these glaciers, be it the Indus river system, be it the
गैंगेटिक रिवर सिस्टम और बी इट दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इन तीनों ही रिवर सिस्टम के जो भी नदियां हैं, दे यू विल फाइंड दैट देयर ओरिजिन इज one or the other of these glaciers found in Himadri region, Himadri or even Himachal region also. So another task is being in name of the glaciers. आपको कुछ name of the glaciers and passes that lie in the Great Himalaya. Passes क्या होते हैं? Passes होते हैं जैसे जो माउंटेन रेंज बताया कि यहाँ से यहाँ तक माउंटेन रेंज है, तो आपको अगर जैसे इंडिया से तिब्बत जाना हो तो how would you go? So sometimes you will find that there is a valley, longitudinal valley, okay, which sort of gives you a path to go from this area to this side to that side. So those things are referred to as passes. You will find that there are Shipki and different. And La is a term in Tibet. La is equal to pass. In Tibetan language, La means pass. So you will see that most of the names in the Himalayan zone will have Shipkila, Boomdila, and different La will be at the end. So all of them are referring to the passes. Okay, coming to the next property. Also the names of the states where the highest peaks are located. So if you do this, that will be helpful in the exam preparation. The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountains system known as the Himachal. तो मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम कौन सा है? हिमाचल, जो मिडिल, और इसको क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयास. The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. Highly compressed and altered rocks. Highly compressed. So again the nature of rock will be metamorphic. जब बहुत ज्यादा compress हुआ है, इसका मतलब उसका nature metamorphic हो जाएगा. The altitude varies. So again it is important to know which kind of rocks are found in which region, which kind of soil is found in which region. So all of these can form a question in the exam. The altitude, अब height की बात आ गई. Altitude varies between 3700 and 4500 meters. तो उसका कितना था? 6000 था. इसका क्या हो गया? 3700 to 4500 मीटर हो गया. एवरेज विड्थ उसका हमने देखा था 400 to 150 किलोमीटर था. इसका आप अगर देखिए, so average width is what? Average width is 50 kilometers. तो इसमें एवरेज दे दिया, इसमें वेस्ट टू ईस्ट नहीं किया है. बट द जनरल ट्रेंड इज व्हाट? इन द वेस्टर्न साइड width will be more, in the eastern side it will taper down. Okay, that will be the trend, but the average is 50 kilometers. While the Pir Panjal, now Pir Panjal range कहाँ पे है? ये हिमाचल में है. That is lesser Himalayas. जो मिडिल रेंज है, जो बीच वाली रेंज है, उसमें है ये. Forms the longest and most important range. So पीर पंजाल रेंज ये कश्मीर में आप देखोगे, कश्मीर की झेलम वगैरह यहीं पे फ्लो करती है. सो कश्मीर वैली इज इन द पीर पंजाल रेंज ओनली. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज. एंड द धौलाधर, धौलाधर रेंज कहाँ पे है? धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस. तो धौलाधर आपका हिमाचल में हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपको बारालाचाला, इस इन मैप्स में भी आपको बहुत सारे शिपकीला, बमला passes मिल जाएंगे. Similarly, you can refer to these maps for detailed mention. For example, Dhauragili, you can see here is Dhaulagiri. Different ranges are also, different peaks are also mentioned in the map. Okay. Now this range consists of famous valley of Kashmir. Famous valley. अब कुछ famous valleys हैं जो कि हिमाचल, हिमाचल जो कि बीच में है रेंज. ग्रेट हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो है, हिमाद्री और शिवालिक के बीच में हिमाचल है. और वहां पे जो फेमस वैलीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जैसे कश्मीर हो गया, कांगड़ा हिमाचल में हो गया, कुल्लू हिमाचल में हो गया. ठीक है, ये सारी इसमें पड़ती हैं एंड दे आर फेमस हिल स्टेशंस. और फाइंड आउट करने के लिए क्या दे रखा है? कुछ अदर हिल स्टेशंस दे रखा है. इनका लोकेशन मसूरी, नैनीताल, रानीखेत. ओके, इनका लोकेशन आपको पता करना है. द आउटर मोस्ट रेंज, अब जो थर्ड रेंज है उसमें हम लोग आ गए. आउटर मोस्ट रेंज हिमालयाज इज कॉल्ड एज शिवालिक्स. दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, इनका विड्थ बता रहा है चौड़ाई, of 10 to 50 kilometers.
ठीक है, 10 to 50 किलोमीटर, उसका एवरेज 50 था, इसका 10 to 50, सो मैक्स इज 50 एंड हैव एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का क्या रेंज है 900 to 1100, तो इसका था 3700 to 4500, ठीक है, इसका 9,900 to 1000, 1100 meters. So what you can do is you can make a small table and you can just compare, for comparison you can write different properties of these three Himalayas: altitude, width, rocks, टेबल बना लोगे तो आपका इजीली समराइज हो जाएगी सारी चीजें जो मेंशन है यहाँ पे पैसेज फॉर्म में. These ranges are composed of unconsolidated sediments. अब ये क्या बता रहा है, अभी तक कंप्रेस्ड रॉक्स थे, उससे पहले ग्रेनाइट था, ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बना हुआ है, जो कि कहाँ से आई थी, brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. तो जो पहले, सबसे पहले कौन सा रेंज बना होगा, सबसे पहले हिमाद्री बना होगा, उसके बाद हिमाचल बना है, उसके बाद शिवालिक सबसे लास्ट में बना है. तो जब वो रेंजेस बन गए और वहां से रिवर्स फ्लो होने लगी, तो उन रिवर्स ने जो सेडिमेंट्स लाए, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स लाए, वो सेडिमेंट्स जहां पे थे वही अपलिफ्ट होकर के शिवालिक्स बन गए, ठीक है, बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस. तो मेन हिमालयन रेंजेस वही है, ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि उस सेडिमेंट की वजह से बनने से दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम. थिक ग्रेवल एंड एलुवियम से, ग्रेवल क्या होता है, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको ग्रेवल ग्रेवल बोलते हैं, जैसे आपने गिट्टी वगैरह देखी होगी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे जो गिट्टी रखी रहती है, तो दैट साइज्ड स्टोन कैन बी कॉल्ड एज ग्रेवल. तो उस टाइप के स्टोन से, और एलुवियम दैट इज ऑल्सो फाइनर रॉक पार्टिकल्स, यू कैन से ऑलमोस्ट लाइक सॉइल. तो वैलीज इनसे कवर्ड है बिकॉज जो रिवर्स थी पहले से फ्लो कर रही थी वो लेकर इसमें डिपॉजिट की हुई है. द लॉन्गिट्यूडिनल वैली lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. अब ये इंपॉर्टेंट है, दून्स किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा देहरादून, ठीक है, अलग अलग टाइप के दून्स हैं, कोटली दून, पाटिल दून, ये सम ऑफ द फेमस दून्स हैं. तो दून्स किसको बोल रहा है ये, longitudinal valley lying between lesser Himalaya and the Shivaliks, ठीक है. Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. अब ये कुछ क्लासिफिकेशंस बता रहे हैं हिमालय के, वेस्ट टू ईस्ट हमें डिवाइड करना हो, क्लासिफाई करना हो, तो देन हाउ वी डू इट. तो उसके लिए बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं उसको. तो जैसे एक कैटेगरी है कि रिवर वैलीज के आधार पे कर लें, बीच में रिवर्स फ्लो कर रही हैं, डिफरेंट रिवर्स ओरिजिनेट, डिफरेंट मेन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, लेकिन उनकी ट्राइब्यूटरीज बहुत सारी हैं, ठीक है. सो उन रिवर वैलीज के आधार पे एक डिवीजन हो जाता है, जैसे पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज. इंडस एंड सतलज मैप देखते हैं, जैसे आप देखो तो इंडस आपका कहीं इधर से जा रहा है, ठीक है, इंडस रिवर, ये देखिए इंडस रिवर है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रही है, और सतलज, सतलज ये है आपकी रिवर, ये यहाँ से आ रही है. तो इन दोनों के बीच में जो हिमालय है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये मैं एक इलस्ट्रेशन के लिए one example I'm taking out for illustration purposes only. Rest of the same thing you can do by yourself. तो इसको क्या बोल रहे हैं, हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, इसको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज. तो आप देख रहे होंगे कि देर आर 5 रिवर्स, ओके, if you see in including Indus and its tributaries, there are around 5 rivers in this region, and that's why this region is referred to as Punjab. Okay, some part of Punjab is in Pakistan, some part of Punjab is in India, but geographically this whole region, including the regions in Pakistan and India, is called as Punjab, where these 5 rivers are flowing. So Punjab Himalayas बोल लिए जो भी हिमालय का पार्ट इन रिवर्स के बाउंड्री में आ गया.
सिमिलरली वी विल डू, इसको लोकली कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं. That's what is being said. So similarly, if we proceed from west to east, तब क्या होगा? The part of Himalaya is lying between Satluj and Kali River. Satluj and Kali River is known as Kumaon Himalayas. Kumaon Himalayas. सतलज कहाँ है? सतलज अभी हमने देखा. So if you refer to Satluj is here, ठीक है? Satluj is here, and Kali River. Kali River almost forms boundary between Nepal and India, that is Uttarakhand. Uttarakhand is there at this boundary, western boundary of Nepal. तो नेपाल और उत्तराखंड के ऑलमोस्ट बाउंड्री से बहती है काली रिवर. ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय बोल दिया इस रीजन को. तो ऑलमोस्ट कुमाऊं इज इन उत्तराखंड. यू कैन आल्सो गेस दैट हिमालयाज पार्ट विच इज इन उत्तराखंड इज रेफर्ड टू एज कुमाऊं हिमालय. तो ये हम वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. काली एंड तीस्ता. काली तीस्ता इज इन सिक्किम. काली इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द नेपाल. सो इन दोनों के बीच में नेपाल हिमालयास, क्योंकि बीच में नेपाल ही है. एंड पार्ट बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग. दिहांग इज इन अरुणाचल एंड तीस्ता इज इन सिक्किम. सो बिटवीन दिस इसको आसाम हिमालय बोल दिया. Similarly, other regional names are also there, but the more prominent division is of the ranges. That is more important from exam perspective. Now, the Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge again very important. Dihang Gorge है जहाँ से इंडिया में एंट्री लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, तो वहां तक आपका जो ईस्टर्न बाउंड्री है हिमालय की, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री वहां पे है. अरुणाचल के ऑलमोस्ट एंड में है. ठीक है, उसके बाद हिमालय का क्या होता है? वहां जाके खत्म हो जाती है. What happens to Himalayas after that? So the Himalayas bend sharply. हिमालय यहाँ मुड़ती है. अगर हिमालय आप वेस्ट टू ईस्ट यहाँ अरुणाचल में गई, तो अब यहाँ से शार्पली मुड़ेगी. किधर की तरफ? टू दी साउथ. साउथ की तरफ. दिस इज द साउथ डायरेक्शन. वेस्ट टू ईस्ट एंड देन साउथ, एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री है. लेट्स सी इन द मैप. ये अरुणाचल में यहाँ पे जाके मुड़ गई हिमालय. अब यहाँ से जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया का, दिस इज द इंडिया म्यांमार बॉर्डर. और यहाँ पे जो रेंजेस हैं, दीज आर अगेन हिमालयाज ओनली, एंड इनको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं. ओके, सो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया नोन एज पूर्वांचल. ठीक है, इसको पूर्वांचल हिमालयाज बोलते हैं, जो कि एक तरह से आप इसको समझ लो कि नॉर्थ ईस्ट में है. पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones. तो अब इसका कंपोजिशन क्या है? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स. तो यहाँ पे compression of rock, compression of sandstones are what? Sandstones are sedimentary rocks. So sedimentary rock जब बहुत compress होंगी, they will form metamorphic rocks. तो यहाँ पे compression बहुत ज्यादा नहीं हुआ है. और that can also be understood that, इससे भी समझ सकते हैं कि इंडियन ओशन का मूवमेंट क्या है. इंडियन ओशन का मूवमेंट, इंडियन प्लेट का मूवमेंट सॉरी, नॉर्थ की तरफ है, और ये किधर लाई कर रही है? इस साइड. तो इधर प्रेशर उतना नहीं है. हालांकि इसमें हल्का रोटेशन है एंगल का, लेकिन इधर प्रेशर उतना नहीं है जितना इस साइड है. सो कंप्रेशन विल बी लेस. तो यहाँ की रॉक्स जो हैं, दे आर नॉट वेरी कंप्रेस्ड, दे आर स्टिल sedimentary rocks, but strong. No, they are not also very fragile sedimentary rocks. They are strong sandstone because there is some compression, which are sedimentary rocks, okay, covered with dense forest. Okay, they mostly run, and there is dense forest, we all know. Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvachal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills, and the Mizo Hills.